will easily know this algorithm, right? The first one is first come first serve scheduling algorithm. First come first scheduling algorithm. The queue of cylinder request. The queue of cylinder request is like this. Cylinder number 98, then cylinder number 183, then cylinder number 37, then cylinder number 122, then 14, 124, then 65 and 67. Okay, and we have total 200 cylinders, total 200 cylinders from numbering 0 to 199, 0 to 199. Okay, so how this first come first serve algorithm works, and you need to show the movement of your read write head as well, your movement of read write head as well. So this is cylinder number 0 inner part, this is cylinder number 199 outer part, right? And seek time is to go from one cylinder to another, and the cylinder will be between 0 to 199. Okay, I am using track and cylinder interchangeably, right? Okay, once you locate the track means what? You are locating the cylinder only. Okay, so now how this algorithm works? First come first serve. Okay, now in this you will be told that where is your current position, or where is the current position of your read write head, and the current position of read write head is suppose 53. My read write head is at 53. Okay, then the queue, request queue, in that what we have cylinder number 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. These are the request, means go to this cylinder, this is the request. So how efficiently I can move, so I can reduce the seek time. हमारे movement ओछी करवी पड़े के I can reduce the seek time. How can I do that? Right, so right now current position is 53, so I assume this is 53, this position, and what we'll do, the current request that we have, all requests, we will arrange in ascending order, right? Starting from 0 we can arrange in ascending order. So this is 14, then 37, okay, then 53, 65, yes, then 67, then 98, I think 98, then 122, 124, and 183. Okay, this is the current position of read write head. So let me do this. "53" is not my what you can say, it's not in request queue, right? 53 is not in request queue. It is just shows the your current head is at 53. So first come first serve algorithm very simple, બધામાં જ આવે છે. Process scheduling માં આવ્યો, page replacement માં આવ્યો, બધામાં. So it's a simple algorithm, means what? Queue માં જેમ જેમ આવે એમ request serve કરતી જવાની, right?
So we are at 53. The next is 93. So from 53 it will move to 53. It will move to 98. Right? From 98, what is the next request? Next is 183. So it will move to 183. From 183 to 37. So 183 to 37. From 37 to 122. So 122. 122 to 14. So that's we move to 14. 14 to 124. Then 124 to 65. 65. Then 65 to 67. Okay, that's it. See, 53 is not in queue, 0 is not in queue, 199 is not in queue. This is just to show you the cylinder. Okay, 0 to 199, this is the number, right? Because we have 200 cylinder, that is numbering from 0 to 199. So वो है. In between we have cylinders. So this is the request. So वो मैंने ascending order में लिख दी, right? And that will be easy when you write like this. So this thing I have written. Okay. Now what you need to find out here, you need to find out seek time in terms of, right? I'm not saying you in second or millisecond, in terms of number of cylinder that you need to move. In terms of number of cylinder that you need to move, right? Or suppose once we find out that for this I need to move to 500 cylinder, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मोमेंट के लिए कितना टाइम है, that just I will multiply with 500. So I will get my seek time in terms of second time, right? But right now we are finding this seek time in terms of number of cylinder movement, कि कितने cylinder movement है, right? Means 53 to 54, that is 1. That is 1. Okay. So here you can see that this 53 to 98, right? So this is the cylinder movement. So 98 minus 53, that comes to 5 and just 4, right? 45. So from 53 to 98, need to move 45 cylinder. 45 cylinder. Same way for this, you will find out. So if your line is straight like this, what you can do, you can just subtract from last one, like 183 to 53, and it will give you this whole line. But right now let's do this. So 183 minus 98, so that comes to, I think, 85. Correct me if I'm wrong. Okay. Then 183 minus 37, this is 146, this line. Then 37 and 122. So 122 minus 37, that is 85. Then 122 minus 14, let's come to 108. And this is 124 minus 14. 124 minus 14, that comes to 110, right? 2 plus, and 124 minus 65, this comes to 59, and 65, 67, this comes to 2. Okay. So how we are taking this? So you can write like this, 53 minus 98, right? So this will give you a positive value only. So that is 45. So this way we are doing for all. Now if you sum this, that is 45 plus 85
plus 146 plus 85 plus 108 plus 110 plus 59 plus 2. That is what? That is your number of cylinder that you need to move from your current head position to serve this request, right? And what is the total for this? That is 45 plus 85 plus 146 plus 85 plus 108 plus 110 plus 61. That is 640. So 640 cylinder you need to move. This number of cylinder you need to move to serve this request. Okay. Any doubt in this? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. The next is shortest seek time first. Shortest seek time first. Any idea कि क्या होगा इसमें? Just think, by the time I will write this request, क्या होगा? Shortest seek time first. Sir, we move the head to the nearest location first. Yes. Yes. So that is correct. So see, shortest seek time first, and right now we are considering seek time in terms of cylinder, number of cylinder. So shortest seek time means shortest number of cylinder from where? From your current position. Remember, from your current position, wherever you are, from that position, wherever your read write head is, from that position, which is the shortest one, that you need to check. So right now my current position is this 53, right? So now what I need to check? So suppose if you write like this, आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे तो वो इजी रहेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि उसमें आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक में से. सो इफ यू राइट लाइक दिस एंड यू नो द करंट हेड पोजीशन, जो हमने your current head position is what? Current head is 53, right? So right now I am here. Now what? कि ये पूरी सब रिक्वेस्ट है बाकी की, not 0 and 199. This is not in request. Okay. So 53 shortest time. तो लेफ्ट और राइट में देखो जो रिक्वेस्ट है, लेफ्ट और राइट में जो भी रिक्वेस्ट है, जस्ट सी दैट यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 65 है. So what you need to do, 65 minus 53, that comes to 12, and 53 minus 37, that comes to 16, I think. Yes, that comes to 16. ये तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होने वाला है, right? So 16 and 12, which is minimum 65. So your next head movement is towards 65. Now here you need to take care. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट? ये हो गया 65.
Now what you need to do from current head position means now from 65 you need to check which is minimum. जहाँ पे करंट हेड पोजीशन है वहाँ से चेक करना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट सीक टाइम है, मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर मूवमेंट इज मिनिमम, नॉट फ्रॉम 53. Sir, 67. Yeah, that is 67. बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि हर एक बार 53 से चेक नहीं करना है, आपको कहाँ से चेक करना है, जहाँ पे आपकी करंट हिट पोजीशन होगी वहाँ से चेक करना है, राइट. सो फ्रॉम 65 द मिनिमम इज़ 2, क्योंकि लेफ्ट में आप देखोगे तो 37 आएगा और राइट में ये 67 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना होगा 28 होगा, राइट. सो इट विल मूव टू दिस 67. नाउ फ्रॉम 67 this is 98 and this is 37, क्या होगा 98 and yes, तो ये 1 3 3 1 and 37 and 67, ये कितना होगा 30. So now what? 37, sir. Yes, it will move to 37. It will move to 37, right? Now from 37 लेफ्ट में कौन है 14, राइट में कौन है, ये तो 100 हो गया, ये भी हो गया 98. सो दिस विल बिकम 30 + 31 दैट इज 61 और यहाँ पे 37 and 14, so this is 3 and 2 23. So where it will move to this 14, यहाँ पे move, right? Okay, now here from 14 left and right, यहाँ पे 0 don't consider 0, right? shortest seek time first, उसमें यहाँ पे 0 क्योंकि रिक्वेस्ट में नहीं है. Yes, that is 183, but first understand what I am saying that is required, because right now कि ये करने में easy रहेगा but twist आएगा, ऐसा कुछ आएगा, then फिर उस टाइम वो difficulty होती है. Okay, so from 14 0 is not in request, so that's why you cannot consider 0 over here, right? If 0 was there in request, अगर रिक्वेस्ट में 0 होगा देन यू नीड टू कंसिडर 0, बट राइट नाउ हम जस्ट बाउंड्री के लिए ये 0 and 199 यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो फ्रॉम 14 इट विल गो टू 98. फ्रॉम 14 इट विल गो टू 98 क्योंकि वो मिनिमम है. एंड यहाँ से 14 से 183 राइट नाउ यू कैन नॉट गो, राइट, क्योंकि ये पूरा टावर्स करना पड़ेगा. सो इन शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट दे कंसिडर लाइक दिस, जो सीक टाइम करंट हिट पोजीशन से जो मिनिमम है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर वी विल मूव टू दैट, सो इट विल गो टू 98. फ्रॉम 98 now there is no request to left hand side, so you can move this side 122 124 and 183, that is your last 183 last होगा. Okay, and seek time I need to find out in terms of cylinder, then 67 minus 53 directly now we are taking individually, अब हम नहीं कर रहे हैं. So we know कि ये sum plus ये that will give you the seek time, right? So 67 minus 53 that is 414, then 67 minus 14 that is 53 plus 183 minus 14 that is 169, and if you sum this 169
plus 53 plus 14, that is 236. 236. See this 236 and here 640, क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो सर्व करनी है, राइट. फर्स्ट कम फर्स्ट से करो या फिर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से करो. इट्स लाइक दैट कि आप कोई एरिया में गए हो, सो रादर देन लाइक फ्रॉम वन you move from one area to another area. Suppose एरिया 1 में 3 टास्क है, एरिया 2 में अगेन 3 टास्क है, और रिक्वेस्ट आपकी ऐसे आई है. सपोज आपने लिस्ट बनाया है कि एरिया 1 का 1 टास्क, एरिया 2 का 1 टास्क, एरिया 1 का सेकेंड टास्क, एरिया 2 का सेकेंड टास्क, एरिया 1 का थर्ड टास्क एंड एरिया 2 का थर्ड टास्क. तो मीन्स every time you move from area 1 to area 2, area 2 to area 1, area 1 to area 2, like this. But instead of this, what you can do, we know that the 3 task is in area 1, so let's complete that first. So you will complete that and then you will move to another area. Okay, and in our daily life also we do that, right? So this is shortest seek time first. Any doubt in this? No, sir. Okay. Now next is third one is scan. That is also called a elevator algorithm because it works like elevator. Okay. Just think how elevator works. कि elevator है वो कैसे वर्क करता है. Start point to end point. Start point to end point. Okay. So means ऐसा हो सकता है कि वो सपोज थर्ड फ्लोर पे लास्ट पे किसी ने वो लिफ्ट छोड़ दी है. थर्ड फ्लोर पे सपोज लास्ट किसी ने लिफ्ट छोड़ दी है, तो कैसे होगा. दैट इज करेक्ट, मीन्स वो ऐसे जाएगा. बट बीच में पेंडिंग रिक्वेस्ट सर्व करनी पड़ेगी. फ्रॉम Means, which side? Move towards the end means during moving towards the end. अगर Okay. बीच में कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट आई तो उसे फुलफिल करनी पड़ेगी. Okay. Suppose total 10 floors है. थर्ड फ्लोर पे right now you are on third floor and the elevator is moving towards 10th floor. Okay. And the in between requests are there and another request is second floor as well. कि पता है कि एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड. अब वो ऊपर जा रहा है, देन सेकेंड फ्लोर किसी ने दबाया है तो वो वहाँ पे आएगा कि पहले ऊपर की सभी रिक्वेस्ट सर्व करेगा. पहले ऊपर की सभी रिक्वेस्ट सर्व करेगा. यस, राइट. Yes. सो वो ऊपर जा रहा है, सो फर्स्ट इट विल सर्व ऑल दोज रिक्वेस्ट. इट विल सर्व ऑल दोज रिक्वेस्ट कि ऊपर जा रहा है तो बीच में जो भी आएगा वो सब कंप्लीट करेगा. वंस इट रीचेस टू दैट टॉप,
then it will come down. ओके और लास्ट में जो 2 है उसको वो सर्व करेगा. सो राइट नाउ आवर करंट हेड पोजीशन इज दिस 53. और मैंने अभी एलिवेटर में आपको बोला कि योर एलिवेटर इज गोइंग टूवर्ड्स 10th फ्लोर पे जा रहा है, बट यहाँ पे कहाँ जा रहा है वो मुझे नहीं पता है. सो हियर इन सच एग्जाम्पल you have been given that the current head position is 53 and the previous head position and previous head position is 60. Right now currently you are at 53, previous head position has 60, means towards कहाँ पे जा रहा है? Sir, we are going towards 0. Yes, so we are going towards 0 की ओर हम जा रहे हैं. So in between जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हम सर्व करते रहेंगे. But now here it will go to the top. स्कैन में वो एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी टॉप एंड है वहाँ पे जाएंगे. अगर ये 53 टूवर्ड्स 199 जा रहा होता तो सपोज लास्ट रिक्वेस्ट 183 है तो वो 199 पे जाता एंड देन वो रिवर्स आता. 199 पे जाके फिर रिवर्स आता. राइट, दिस इज इन स्कैन and later on they found something in this and then they have resolved this. Okay, so but right now scan algorithm works like this. The last जो भी डायरेक्शन में जा रहा होगा उसमें जो टॉप है मीन्स लास्ट हैंड वहाँ तक हो जाएगा एंड देन रिवर्स उसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी 65, 67, 98, 122, 124 and 183 then stop. रिक्वेस्ट अब ख़त्म हो गई तो यहाँ पे ही लिफ्ट अटक जाएगी. ओके, सो इन दिस the seek time that is 53 53 minus 0, 53 plus 183 minus 0, 183, and this comes to 236, similar to previous one, this one. Okay, but improvement to first come first serve. So this is scan or elevator algorithm. Okay, now they have observed that कि यहाँ पे जो मीन्स आपको भी वो दिमाग में आया है कि ये क्यों जा रहा है यहाँ पे. So they have observed this and they have resolved this thing with look scheduling algorithm, right? With look scheduling algorithm, right? So in this we will go to that direction. So हमें पता है कि यहाँ 51 पे हमारी current head position है, previous position is 60, so means we are going towards 0. But now towards 0 जो भी request होगी that I will serve, but I will not go to the end. मैं end तक नहीं जाऊँगा, right? So for 14 is the last request. From there only I will go back. So from 14 अब जो next है that I will serve 65, 67, 98, 122, 124 and 183. Okay, so now here the seek time will be improved. इससे तो कम ही होने वाला है, right? So 14 यहाँ पे जा रहा था, 14 यहाँ पे वेस्ट हो रहा था, so 28 वेस्ट हो रहा था, right? So if you do this 53 minus 14 and 183 minus 14, this will end up to 208 for
look or look. Now another problem in this scan and look is right now what we are considering. We are considering that कि यहाँ से suppose total cylinder are 0 to 199. Total cylinder are 0 to 199, right? So total cylinder are 0 to 199, but suppose your number of cylinders are more, क्योंकि वो ज़्यादा ही होने वाला है. So suppose it is a 5000, so 0 to 499. In that case, suppose you are at cylinder number 1500 और आप towards 0 जा रहे हो, तो 0 तक और लास्ट रिक्वेस्ट तक आप सभी सर्व करोगे, उसके बाद आप रिटर्न होगे. अब जब रिटर्न होंगे तो लास्ट रिक्वेस्ट से 1500 तक वहाँ पे तो कोई रिक्वेस्ट आने वाली ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपने सब सर्व कर दी. एंड सपोज योर लास्ट रिक्वेस्ट आर टूवर्ड्स 499, मीन्स सभी रिक्वेस्ट 3000 के अप है. 3000 के अप है. सो फ्रॉम the last request that you have served which is towards 0, वहाँ से लेके आपको 3000 तक तो कुछ करना ही नहीं है. It will just move, and from 3000 onwards it will do something. It will serve the request. So what they have done for scan के लिए उन्होंने क्या किया, right? For scan, that from 53 they are moving 37, 14 and 0. Now यहाँ से next 65, 67 ऐसे सर्व करने की जगह from 0 they have direct go to 199. They directly go to 199, right? And from this 199 what they do, they serve this request 183, 124, 122, 98, 67 and 65. This way. What is the observation they have done? कि read write head जो है from innermost position to outermost position जाना है, right? अगर मुझे इन बिटवीन जाना है, लोकेट करना है, सो आई नीड टू चेक द एड्रेस एंड आई नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस. दैट विल टेक अ टाइम, बट फ्रॉम 0 टू डायरेक्टली गो टू 199, क्योंकि एक एंड से डायरेक्टली लास्ट एंड तक जाना है, बीच में मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, राइट? एंड योर रीड हेड विल मूव इन बिटवीन. सबसे लेफ्ट कर दिया देन 0, सबसे राइट कर दिया 199 विदाउट सीइंग द एड्रेस. So this time is very small. ये टाइम बहुत कम होगा, right? Instead of you are moving to this, क्योंकि वहाँ पे आप चेक करते जा रहे हो कि पर्टिकुलर एड्रेस पे आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, right? बट यहाँ पे क्या है, एक एंड डायरेक्टली गो टू अनदर एंड. ओके, सो दिस टाइम इज़ वेरी स्मॉल. एंड व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ से मैं एक एंड पे जा रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट सर्व हो रही है, देन आई विल डायरेक्टली मूव टू अनदर एंड एंड उसके पास में जो रिक्वेस्ट है आई एम सर्विंग दोज रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट मैं सर्व कर रहा हूँ, राइट? तो इसमें ये हुआ कि ये 0 पे जा रहा है एंड दिस इज सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन. स्कैन में हम क्या कर रहे थे, 0 तक जा रहे थे और 0 थे यहाँ से रिवर्स कर रहे थे. दिस वन रेड वन यहाँ पे ये हो रहा था. इन सी स्कैन 0 तक जाएंगे. अब यहाँ से रिवर्स में ये जो हो रहा था वो नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली विल गो टू 199 जो सेकेंड एंड है, नॉट सेकेंड एंड, अनदर एंड. एंड फ्रॉम 199 विल सर्व द रिक्वेस्ट. अब लुक उसका भी वर्जन है.
कि जो स्कैन में किया वो लुक में क्यों नहीं कर सकते. सो दैट इज लुक, सी लुक. और उसमें क्या है, यहाँ पे जो 0 पे जा रहा था लुक में हम 14 तक जा रहे थे और 14 से हमने रिवर्स लिया था. सो नाउ इन लुक व्हाट दे विल डू, they will from 14 they will directly go to 183, the last request, and it will take some more time to compare to this one. एक एंड से जो दूसरे एंड में किया है उससे वो ज़्यादा टाइम लगा है, बट स्टिल इट इज़ इफ़ेक्टिव, क्योंकि मैं एक एंड पे जो है रिक्वेस्ट वो सर्व कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू अनदर एंड और वहाँ पे जो नियरेस्ट सिलेंडर है वो सर्व कर रहा हूँ. ओके, so in between if you don't have cylinder request, then this will give you a good performance, your C look and C scan, right? And from 183 it will go to 124, 122, 124, 122, 98, 67 and 65, right? So these are the 6 disk scheduling algorithm. First come first serve, shortest seek time first, then scan, look, C scan, C look. Now in exam, remember this. If such kind of algorithm is asked, and mostly एक બે કેવા જોડે પૂછાય, right? So what you need to do, the queue is given, you will arrange like this, આ રીતે arrange કરી દેશો. Now take a whole page, જ્યાં પણ લખો છે ત્યાં આખું પેજ લઈ લો અને આખા પેજમાં આખી લાઈન બનાવી દો ઊભી. Once you do that, now separate this. This thing is for first come first serve, and remaining line that is for shortest seek time first. So you will save your time કે આ જ વસ્તુ પાછી બધી લખવી, sort કરવી, એમાં તમારો ટાઈમ બચી જશે. And remember this thing કે આ queue અથવા તો રેફરન્સ સ્ટ્રિંગ પેજ રિપ્લેસમેન્ટ અલ્ગોરિધમની અલ્ગોરિધમ જ્યાં તમે સોલ્વ કરો છો એ જ પેજ પર ઉપર હોવી જોઈએ. Because if you are moving your page કે આગલા પેજ ઉપર છે પાછળ જોશો, definitely you will make a mistake, એમાં મિસ્ટેક થશે, રાઈટ? તો એ ઉપર જ હોય એ ધ્યાન રાખજો. And for this you can do like this, and here you can write seek time for this first come first serve, seek time for this shortest seek time first. હા તમે અહીંયા લખી શકો. Okay, so this way you can save your time for this distributing algorithm. Any doubt in this?